Okay, so let's start with trigonometry. So trigonometry kya hai? So essentially you first need to know about these basic definitions of sine, cos, and tan. Okay, I'm going to make a simple triangle here. So let's say you've got a triangle like this. Okay, it's a right angle triangle. अच्छा, सबसे पहले तो we define sine, cos, and tan ratios using these right angle triangles. But how do we define that? So let's say you got this right angle triangle. यहाँ पे ये angle जो है, that's the right angle. This angle at the bottom, this is right angle. Okay, and what we have is, let's say this is our point A, this is our point B, and this is our point C. We've got 3 points here, A, B, and C. Okay, now we have this angle here, let's say. This angle is theta. Let's call this angle theta. And based on this angle theta, we have 3 different ratios that are defined. So one is called sine, it's a sine theta. The other is called cos, and the third one is called tan. So these are three ratios that we will be discussing in trigonometry. Okay, these are called trigonometric ratios. How are they defined? Sine theta is equal to perpendicular over the hypotenuse. I'll just explain to you what perpendicular means here, what the base means, and what the hypotenuse means. But this is how it's defined. Sine theta kya hota hai? Perpendicular over hypotenuse. Okay. What about cos theta? Cos theta is base divided by the hypotenuse, and tan theta is perpendicular divided by the base. Okay. But now, what is this all about? What is perpendicular? What is base? What is the hypotenuse? So remember, if we have a right angle triangle, we're talking about a right angle triangle. If you have a triangle like this, a right angle triangle, 90 degrees के opposite वाली side होती है ना, that is always the hypotenuse. The side that is opposite to the 90 degrees, that is always going to be the hypotenuse. Okay, side that is opposite to the 90 degrees. This side is always hypotenuse. Okay, so that's fairly easy to spot. Okay, 90 degrees के opposite हमेशा hypotenuse. Amna, this is O-level maths, which we are doing trigonometry. O-level maths, trigonometry. Okay. Acha. So this is the hypotenuse. Okay. Now, if this is the angle theta here, if this is the angle theta here, अब उस theta के हिसाब से आप देखते हो कि आपकी base कौन सी होगी और perpendicular कौन सी होगी. ठीक है. अच्छा. Base क्या होती है? Base is the side that is adjacent to the angle. Adjacent to the angle. जो साइड के साथ, जो एंगल के साथ वाली साइड होती है ना, उसके साथ लगी होती है. ये एंगल देखें, एक तो हाइपोटेन्यूज है ऊपर, वो हमने डिफाइन कर लिया. ठीक है. एंगल के जो साथ वाली साइड है, दिस इज कॉल्ड बेस. जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो, उस एंगल के साथ वाली जो साइड होगी, दैट विल बी कॉल्ड बेस. ओके. परपेंडिकुलर क्या होएगा? Perpendicular is going to be the side that is opposite to the angle. जो angle की opposite side होगी, angle की दूसरी side पर. So the opposite side to this angle is this one, right? दो तो साथ लगी हुई हैं. एक side पे hypotenuse है, दूसरी side में base है. जो तीसरी side होगी, जो उस angle के opposite होगी, that is known as the perpendicular. That is known as the perpendicular. ओके, सो ये चीज याद रखनी है. परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के ऑपोजिट होता है और बेस हमेशा एंगल के साथ होती है. ओके, दिस इज हाउ दीस रेशियोज आर डिफाइंड. नाउ there's a way to remember this. So now different people remember it different ways. One possibility is, you might have heard of that some people have. So let me actually use capital letters there. So just to remember these things. Can be perpendicular hypotenuse कब होता है, base और hypotenuse कब होता है, perpendicular over base कब होता है. You've got this thing that some people use to remember. Some people have curly brown hair through proper brushing. And of course, I've heard of some other ways of doing this as well. So
You can remember it anyway you're comfortable. That's perfectly okay. So the first letters here, you see, this is S, this is B, and this is H. That gives you sine theta equals perpendicular over the hypotenuse, right? So this represents sine. Then you have P here, that is perpendicular, and H is the hypotenuse. Okay, similarly, you've got C here, and B here, and H here. Okay, so C se kya bana? That's cos. Cos theta is equal to base over hypotenuse, and then you have T here, and P here, and B here. That gives you tan theta equal to perpendicular over the base. So that's one way to remember this. Okay, all right. Now, these are the basic definitions that you need to know of. Sine kaise define hota hai, cos kaise define hota hai, tan kaise define hota hai. So now if you had a right angle triangle like this, so if I were to make this right angle triangle here, something like this, I've got this side here, I've got this side here, I've got this side here. It's a right angle triangle, right? One angle is 90 degrees. Right angle triangle kya hoti hai? Isme ek angle 90 degrees hota hai. So this angle is 90 degrees. And you are given that this angle, for instance, is 30 degrees. This angle is 30 degrees. And you're also given that the side, let's say this is A, this is B, and this is C. You've got three sides given. Let's say one of these sides, for instance, AC, is 15 meters. Okay. Now, how can we find the length BC? BC कैसे figure out कर सकते हैं? Think about this. BC हमें figure out करना है. Similarly, if you want to find AB कैसे figure out करें? This is the information that we have. Okay, we have a right angle here. ये right angle है. एक side है 15 meters, and we have an angle here. So what do we do for this? So Manil is saying we should be using cos. Why? So think about this. The angle that we have this angle here. That's 30 degrees. ठीक है? 30 degrees. 30 degrees के साथ वाली side, adjacent side, is 15. This is your base in this case. This is going to be your base in this case. Why? Because this is a side that is adjacent to the angle. Side उसके angle के साथ लगी हुई है, right? So that's the base. आपको find क्या करना है BC के लिए? BC के लिए आपको hypotenuse find करना है. BC क्या है? BC is the hypotenuse. So the ratio that we need is that connects base and hypotenuse. Base और hypotenuse से कौन सी ratio connect करती है? That's cos. Exactly. Mahad, that's correct. And Stephen as well. So we're going to be using cos here. Cos of 30 is equal to base, that is 15, divided by the hypotenuse, and that is unknown. Okay, so BC आपको नहीं पता, BC आपको figure out करना है. You just input the value of cos 30 here. It's paper 2 that you're going to be tested on in July. So you just use the calculator. आपको values याद रखने की जरूरत नहीं है. Cos theta आप उस calculator पे डालोगे. Cos 30 आप calculator पे डालोगे. So that's 15 divided by cos of 30, and that will give you a result. आपको मिल जाएगी BC की value. Okay, so anybody can tell me what that is? BC की value क्या आती है यहाँ पे? Virat, beta, that's what I just told about. Base और perpendicular में किस तरह differ करते हैं. जो आप angle consider कर रहे हो, ये angle के ऊपर depend करता है. ठीक है? जौन सा angle आप consider कर रहे हो, उस angle के साथ जो side होगी, adjacent to that is going to be the base. And the side that is opposite to the angle, like this is going to be your perpendicular. Angle के opposite side is perpendicular, and the side that is adjacent to the angle, that is the base. Okay, let me repeat it again. So let's say you've got an equation like this. So let me go back there. So हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था? हमारा जो एंगल था, that was here. नीचे एंगल आ रहा है, ठीक है? The angle was here. ये एंगल, ठीक है? इस एंगल के साथ जो साइड थी, that was base. इस एंगल की जो ऑपोजिट साइड है, on the other side, that was perpendicular. अब ये इस एंगल को मैं नीचे से उठा के ऊपर रख दूं, और मेरे पास अगर इस तरह की ट्रायंगल बन जाए, something like this. I've got the right angle here. और मैं एंगल ऊपर वाला कंसीडर कर रहा हूं,
तो उस एंगल के साथ वाली जो साइड है, एंगल के साथ वाली जो साइड है, दैट इज बेस। मेरा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे अब, और जिसकी ऑपोजिट साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट रहता है। हाइपोटेन्यूज तो बस राइट एंगल का जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। So I hope that answers the question. Aisha is asking, how do we understand where we should be using sine, where should we be putting cos, where should we be putting tan? So remember, हमारे पास ratios क्या हैं? We've got sine theta equals perpendicular over the hypotenuse. Cos theta is equal to base over hypotenuse. And tan theta is equal to perpendicular over the base. ठीक है, तो आपको देखना है आपको क्या चाहिए, क्या गिवन है और आपको क्या चाहिए। सो इस केस के अंदर जब हमें बीसी फाइंड करना था, जब हमें बीसी फिगर आउट करना था, तो बीसी क्या था? बीसी वाज हाइपोटेन्यूज, राइट। हमें क्या गिवन था? हमें बेस गिवन थी, दैट वाज 15 मीटर्स, और ये एंगल के हिसाब से 30 डिग्री के हिसाब से बेस और हाइपोटेन्यूज को कौन सी रेशियो कनेक्ट करती है? दैट्स cos. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड कि हमें cos यूज करना चाहिए, ठीक है। Similarly, we have to find AB here. वैसे तो हमारे पास Minahil said this is 17.32. So if we have found the hypotenuse now 17.32, अब अगर हमें AB figure out करना होता, इसके दो तरीके हो सकते हैं। We could use Pythagoras, right? Pythagoras तो आप लोगों को पता है, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, base square plus perpendicular square equals hypotenuse square. You could have used that. उससे भी आपके पास ये नीचे वाली AB साइड आ सकती थी। You could say AB का square is equal to, या तो इस तरह कर लें, AB का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर should be equal to 17.32 स्क्वायर, और यहां से आपके पास AB की वैल्यू आ जाती, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस। यहां से ये भी कर सकते थे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? आप देखिए कौन सी वाली साइड आपके पास है? आपके पास 15 मीटर्स गिवन है, दैट इज योर बेस, राइट। आपको फाइंड क्या करना है? AB, दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सी रेशियो कनेक्ट करती है? परपेंडिकुलर और बेस को, दैट्स tan। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे tan of theta is equal to perpendicular, that is AB divided by the base. Base is 15 in this case, so we say tan of 30 here, tan of 30 degrees is equal to AB over 15, और यहां से हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, that's 15 times tan of 30. You just find this out from your calculator. के पास क्या आता है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम वहाज, good to see you here. Ikra, yes, we will be doing sine and cosine rules next. Yes, Minahil. So we could apply sine here as well because we've already found the hypotenuse. अब क्योंकि हमारे पास hypotenuse आ गया है, तो हम उसके बाद फिर हम sine भी यूज कर सकते हैं. That is also possible. हम जो है वो हाँ साइन यूज कर सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं. Yes, that's correct. वालेकुम अस्सलाम Asfa. Okay, all right, let's go to the next. So what do you get here? 15 tan theta, 15 tan 30. What do we get? 15 into tan of 30. 15 into tan of 30. What do we get? Walaikum assalam, Zainab. So that's 8.66. Okay, thank you. So that's 8.66. That is the value of AB. Okay. Yes, Hassam. So that this is not the only thing that we're doing. So this group is only for covering some important topics. उनके concepts वो भी जो हम practice कर रहे होंगे वो हम दूसरे group में कर रहे होंगे. उसमें हमारी we have 4 classes a week, right? So this one is free, but the other one is paid. तो हम यहाँ पे topics discuss कर रहे होंगे इंशाल्लाह for most of the important topics के concepts discuss कर रहे होंगे सब, ठीक है? But practice ज़्यादा जो है वो दूसरे group के अंदर हो रही होगी. अच्छा, now let's yeah, so we talked about the basic ratios, okay? अब ये basic ratios जो होती है ना आपके पास, जो हमारे पास ये होते हैं sin theta equals perpendicular over hypotenuse, cos theta equals base over hypotenuse, and tan theta equals perpendicular over the base. ये जो तीनों चीजें ना हमारे पास, they only work
they only work for right angle triangles. ये हर triangle पे नहीं लगते, because right angle triangle के अंदर ही आपके पास सिर्फ ये चीजें होती हैं, hypotenuse, base, perpendicular. They're not defined for other triangles, right? So these only work for right angle triangles. ठीक है? Okay. Now, what about this now? अब ये देखते हैं कि what do we do in other types of triangles? So what if we have something like this? We've got a triangle like this. Okay. Now this is not right angle. It's not a right angle triangle. ठीक है? अब इस तरह के triangles के अंदर we've got two other relationships. We've got two other relationships. Yeah, some it's similar there as well. So we have some free classes for Sir Harun as well, and some paid classes. So it's similar that the important concepts will be discussed in these free lessons, and practice is going to be mostly in the paid one. Okay, so what do we do this in this case? Actually, let's say we've got three sides here. This is A, this is B, and this is C. Okay, now those of you who have done the full courses earlier, you may understand कि ये चीजें कहाँ से आ रही होती थी, हमारे पास ये rules किस तरह से defined होते थे, किस तरह से derive होते थे. But यहाँ पे of course we're just doing revision. I'm just going to put those formulas in front of you here. So we've got two rules here that we use. One is called the sine rule. Let's start with that. Sine rule. Okay. Let's see how this is defined. Sine rule basically says in any triangle, that condition is not there anymore. It does not have to be a right angle triangle. It could be any triangle, any triangle. In any triangle, there's a relationship between the sides and their opposite angles. A over sine of A, that is equal to B over sine of B, and that is equal to C over sine of C. Now, ऊपर वाले जो letters हैं ना, they are small letters, A, B, and C. They represent the sides. The big letters, जो capital letters हैं, they represent the angles. Okay? So ये sides इस तरह से हम इसको represent करते हैं. ये side small a वाली side कौन सी होगी? जो angle हम consider कर रहे हैं ना, if this point is A, इसके जो opposite side होती है ना, we label that as small a. Okay? इसके साथ correspond कर रही है side इस angle को, that is the small a. Okay? जो side B को correspond कर रही है capital B को, that is the side small b. और जो side C को correspond कर रही है, that is the small c here. ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. Another way to write that same thing could be, you could say this is BC over sine of A, that's equal to AC over sine of B equals AB over sine of C. ठीक है, अब इसको reverse भी कर सकते हैं. So we'll discuss some examples of this, a couple of examples of this, but this is how the sine rule is defined. अच्छा, ये हम कब use करते हैं? ये हम तब use करते हैं when we have at least one pair of a side and an angle given. ठीक है? यहाँ पे when can we use this? We have at least one pair of an angle and its opposite side given. इनको हम पेयर कहते हैं कि एक साइड है और उसके ऑपोजिट एंगल, ये हमें गिवन हो, और बाकी किसी चीज साइड का हमें या तो एक लेंथ पता है उसके ऑपोजिट एंगल फिगर आउट करना है, या फिर एक एंगल पता है उसके ऑपोजिट साइड फिगर आउट करनी है. ओके, सो ये चीज इंपॉर्टेंट है. एक पेयर आपके पास होना चाहिए, वन साइड एंड वन एंगल. Okay, one side in the angle opposite to that, or one angle in the side opposite to that.
उसके साथ साथ फिर you can use that information something else along with something else to find any unknowns that you have there in that particular triangle. Now let's take an example. So in this case, for instance, I'm going to erase what it had at the top there. Erase that stuff. Let's take an example. Let's take an example. Okay, yeah. Acha. Now, let's say you got a triangle like this. Just a rough one. This is the triangle that I have. Okay. This is A, this is B, and this is C. And I'm told that this angle that I have here is 30 degrees. And I also know that, let's say this angle here is 70 degrees. And I know that this side here is 15. AC is 15. Okay, this is what we have given. Achha. Now, using this information, what I have to find is, what is the side AB? AB की length figure out करें, ठीक है? AB की length figure out करें. How do we do that? Now, think about this. We look at the triangle and we see what information we have available. We've got two angles, right? हमारे पास two angles हैं, और एक angle के opposite side given. So we have one pair here, one angle and the opposite side. This is a pair that is given. इसके अलावा we have one other piece of information. We also have इसके अलावा we have one other piece of information. I think I got muted there. Achha, I'm sorry. I think I got muted there. Can you guys hear me? Can you guys hear me? I'm sorry. I think I got muted for some reason. Could you hear me earlier as well? Did you lose my voice at any point? No. Okay. Acha. So anything that you've missed, so you can see the screen. Anything here, जो आपने miss कर दिया, because for a few seconds. Okay. You understand what you've done here, right? In the triangle बनाई है जब मैंने कहा कि हमें AB figure out करना, you understand that much. Is that correct? You understand कि हमें ये triangle है, we got two angles given, and we have one side given. We have one pair of angle and the side given. We have to find this unknown side, that is AB. Okay, good. All right. Now, let's see how we can find that. We have a pair given here. We have a side given, that's 15. We have an opposite angle given. ये angle है. AB क्या है? AB is the side that is opposite of the side. ये हमें side figure out करनी है. ठीक है? How do we do this? We apply the sine rule. Sine rule क्या होता है? एक side हो, उसके opposite angle उसके नीचे आ जाए. दूसरी साइड उसके ऑपोजिट एंगल नीचे आ जाए उसका साइन, तीसरी साइड उसके ऑपोजिट एंगल का साइन नीचे आ जाए. लेट्स फॉर्मुलेट दैट हियर. हम क्या करते हैं, हमारे पास AB है जो हमें फिगर आउट करना है, इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ऑपोजिट एंगल कौन सा है, दैट्स दिस 30 डिग्रीज. 30 डिग्रीज का साइन हमने नीचे लिख दिया, साइन ऑफ 30. दिस शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ दैट इज 15 AC. 15 जो लेंथ आ रही है वहां पे, divided by the sine of this angle that is opposite of this side, that is sine of 70 degrees. यहाँ से क्या होगा, we will be able to find the value of AB, the length AB. AB की लेंथ आपको यहाँ से मिल जाएगी. So can anyone tell me what that is? AB की लेंथ क्या आती है यहाँ से? AB is going to be equal to 15 into sine 30 divided by sine of 70. Okay, so Viraj is saying it's 7.98, and I get another confirmation as well. So this is 7.98, the final answer. So AB turns out to be 7.98. देखिए आपके पास final result है. Okay, does that make sense to everyone? Any issues with this? Any problems with this? Any problems, anyone?
Okay, good. Now let's look at what would happen if we had to find the length BC. The second last part. Where exactly, Manahil? Which part exactly? Manahil, I don't understand exactly. कि आप second last part का क्या मतलब है? Okay, second last step. Okay, there are only two steps there. So basically what we're doing is we are saying साइन रूल क्या होता है, हमारे पास एक साइड होती है, ठीक है, एक हमारे पास साइड होती है, उसके ऑपोजिट एंगल हम नीचे लिखते हैं. So this is what we are doing here. We've got one side and we've got the angle that is opposite to that and the denominator a over sine of a. Similarly, the other side divided by the sine of the opposite angle and so on. यहाँ पे हमारे पास क्या information? We've got one side that is 15 and we have the sine of the angle that is opposite to that 15. So that becomes 15 over sine of 70. So that's actually 70. Raise हो गया वहां से किसी तरह. So that's 70. 15 over sine of 70. ये हमारे पास एक पेयर आ गया. Okay. दूसरा पेयर क्या है? Is 30 degrees. इसका साइन नीचे है यहाँ पे. इसके जो ऑपोजिट साइड है that is AB. ये हमें फिगर आउट करना था. अगर हम इसको x कह लें, this is what we have to figure out. So that's this value here. AB over sine of 30. ये हमारे पास हमने साइन रूल सिंपली अप्लाई किया है. एक साइड उसके ऑपोजिट एंगल that's equal to the other side उसके ऑपोजिट एंगल. बस इसको सिंपलीफाई कर लेंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? It becomes AB equal to 15 into sine of 30 divided by sine of 70 degrees, and you'll be able to evaluate this. Yes, exactly. We found the length of AB, Mahad. So AB की length figure out कर रहे थे ना. AB की length हमारे पास आ गई. ठीक है. What if we had to find, let's say, the length of BC? How do we do that? अगर हमें BC की length figure out करनी, 7.98. That's what Viraj told us. You can just confirm that. आपके पास क्या आता है उससे? 7.98. Yeah, that's what we're doing. Okay. अच्छा, BC figure out करना. Okay, so Manil is saying it's 7.04. Okay, so I think I should get my calculator just to confirm. So just give me a few seconds. I'll be back with my calculator just to confirm because I'm getting different results here from different people. Let's actually do it here. Sine of yeah, 7 sine 30. Okay, it's 7.98. Manahil, it's 7.98. I just checked this. It's 7.98. That was correct. Okay. You can just try to do this again. Make sure your calculator is in the right mode. It should be degrees. Radians में ना हो गया गलती से. But 7.98 याद है. अच्छा. What about BC? BC कैसे figure out करें? Length BC. How do you figure this out? Length BC. अब देखें. Again, what pair do we have? We already have one pair in this. That is this angle 70 and this side that is 15. Okay, we've got 15 divided by sine of 70. ये तो हमारे पास है वहाँ, ठीक है. हमें BC figure out करना है. ये length. This is the length that we're trying to figure out. Let's say this is x. कैसे figure out करें? X divided by the angle that is opposite to this side, right? Angle that is opposite to this side. Can you guys hear me? Can you guys hear me? Can you guys hear me? Okay, ठीक है. So if my voice breaks at any point, please do let me know because मुझे यहाँ पे ना जो इसका interface है उस पे show हो रहा होता है कि I got muted. So I just want to confirm.
Okay, good. Thank you. So Minar is saying there's no angle that is opposite to BC. Is that correct? BC के opposite कोई भी angle नहीं है हमारे पास. Yes, angle का हमें पता नहीं है अभी, लेकिन angle तो है ना उसके. यहाँ पे ये जो side है इसके ये angle कोई ना कोई या तो angle बन रहा होगा यहाँ पे. हमें उसकी value नहीं पता अभी. That is the problem, right? We don't know what that angle is, but the angle does exist, right? The angle does exist. But what is that angle? We know that this is 70 and this is 30. But this is 70 and this is 30. तो बाकी तीसरा angle क्या बचा? That's 260, Stephen. Angle total angles तो 180 होते हैं एक triangle के अंदर. 360 कैसे आया? Yes, we would add all the angles. So 180 में से subtract करेंगे ना, Stephen. I think we're subtracting from 360. Total angles in a triangle is 180. 180 minus 70 minus 30, and you get that third angle. ठीक है, मैंने the other way around बेटा. 180 minus 70 plus 30. 180 में से subtract करना है. ठीक है, so third angle here turns out to be 80 degrees. So that angle is 80 degrees. Once you have that angle, you can use that here. You can say this is x over sine of 80. That is equal to 15 over sine of 70. यहाँ से आपके पास x की value आ जाएगी. ठीक है, that will be 15 into sine of 80 divided by sine of 70. ये आप calculator से evaluate कर लोगे. अब देख लो आपके पास क्या आ जाएगा. ठीक है. So I think this is 15.72. 15.72 meters, or whatever that unit was. 15.72, that is the value of, that is the length of that side BC. All right. Is this clear to everybody? ये इस तरह से हम sine rule use करते हैं. ठीक है, इस तरह से हम sine rule use करते हैं. Okay, now let's try another example. So what happens in this case? So let's make up another triangle here. Let's make up another triangle here, and let's have some lengths in that. So we've got something like this. Okay, and what we are given is, what we know is, we know that this angle here is, let's say, 65 degrees. And we also know that this length of this triangle on the base, you can say that is 10, and the other length there on the other side, that is 6. So there's a triangle like this. You've got a length here given, that's AB. AB length is 10. You're given AC. AC is 6. So if I were to write that properly, AC is equal to 6. AB is equal to 10, and the angle BAC is equal to 65 degrees. This is the information that you have. And what we need to do is we need to find the length BC. BC length हम figure out करेंगे. How do you figure this out? BC. Okay, Abdullah saying cosine rule. So we haven't really done that yet, but yes, that's what we have to do, because remember sine rule कब apply हो सकता है? When we have at least one pair. एक pair हमारे पास होना चाहिए एक angle का और उसके opposite side का. अब यहाँ पे हमारे पास एक भी pair नहीं है. हमारे पास एक भी pair नहीं है. The problem is we know this angle, लेकिन इसके angle के opposite side नहीं पता. Okay, तो ये pair भी नहीं है. अच्छा, ये हमें side पता है 10. We don't know the opposite angle. Okay, so we can't use sine rule again. ये भी नहीं पता हमें. What about this 6? 6 के opposite angle? ये भी नहीं पता. We don't have any pair of a side and the corresponding angle. कोई भी pair नहीं है हमारे पास, right? But क्योंकि हमारे पास कोई भी pair नहीं है, we cannot use the sine rule. Here comes the other rule that is called the cosine rule. ठीक है? अच्छा, अब cosine rule क्या होता है? It's given by something like this. A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos of A. Okay? And now again, ये जो small a, b, c है, ये उसी तरह से लिखते हैं हम. Capital A के जो opposite side होती है, that's called small a.
कैपिटल C के जो ऑपोजिट साइड है दैट्स कॉल्ड C, स्मॉल c की वैल्यू यहाँ पे 10 है. कैपिटल B के जो ऑपोजिट साइड होती है दैट्स कॉल्ड स्मॉल b, दैट इज 6. दिस इज हाउ द कोसाइन रूल इज यूज्ड. अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए तीनों साइड्स यूज होती हैं इसके अंदर. कोसाइन रूल के अंदर तीनों साइड्स आ रही होती हैं, तीनों साइड्स. ठीक है, वी हैव ऑल थ्री साइड्स हियर, A, B एंड C. तीनों साइड्स यूज होती हैं और उनके साथ एक एंगल यूज होता है. तीनों साइड्स यूज होती हैं, एक एंगल यूज होता है. तो आपको कम से कम दो साइड्स तो पता होनी चाहिए कोसाइन रूल यूज करने के लिए. कोसाइन रूल में अगर आपको दो साइड्स नहीं पता, यू कैन नॉट यूज कोसाइन रूल. ओके, दो साइड तो मिनिमम पता होनी चाहिए. अब ये भी आपको देखना है कि ये एंगल कौन सा है. ये जो एंगल आपके पास आ रहा है ये कौन सा है, ये आपको देखना है. जो एंगल आप यूज करते हो ना, तो लेफ्ट साइड पे साइड जो जो लेंथ आ रही होती है ना उस रूल के, इसके ऑपोजिट एंगल आपके पास कोसाइन रूल में आ रहा होता है. Does that make sense? This is the angle opposite. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, आपको आप कंफ्यूज कर देते हो कि एंगल कौन सा यूज करना है. इट्स द एंगल ऑपोजिट टू द साइड, टू द लेंथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जो उस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो साइड है ना, जो लेंथ है, उसके ऑपोजिट एंगल जो है वो यहाँ पर आ रहा होता है हमारे पास. दैट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या फिगर आउट करना है, हमें ये वैल्यू फिगर आउट करनी है, ये लेंथ क्या है. ओके, what we can do is we can use this cosine rule here. We can say this a square equals b का square, b क्या है, b is 6, so that's 6 का square plus 10 का square minus 2 into 6 into 10, 2 into bc into cos of what, ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास लेंथ थी, इसके ऑपोजिट एंगल, दैट्स द 65 डिग्रीज. तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 डिग्री. Now we can evaluate this and see what we get. Okay, Viraj, do you hear me now? Viraj, can you hear me now? Okay, is there any lag still, or is it okay? Okay, all right. Sorry about that. So, okay, good. So the LHS means it's the left hand side. I just said left hand side. जो आपके इक्वेशन के ऊपर लेफ्ट साइड पे जो लेंथ आ रही है ना, इसके ऑपोजिट एंगल ये होता है. ठीक है, जो एंगल आप यूज करते हो ना कोसाइन रूल के अंदर, इट्स द एंगल दैट इज ऑपोजिट टू दिस लेंथ. So that is what you need to remember. That I wrote left hand side there. Okay. अब इसको इवैल्यूएट कर लेंगे, बस यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा. So you get 36 plus 100 minus 120 into cos of 65 degrees. You can see whatever that evaluates to. ठीक है, that will be your length BC. या बस BC की लेंथ आ जाएगी. ओके, वहाज वो तो आपके पास सिर्फ सिंपल रेशियोज होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है. उसके साथ आपको साइन रूल का पता होना चाहिए, कोसाइन रूल का पता होना चाहिए, आपको पाइथागोरस आना चाहिए, आपको बेयरिंग्स आनी चाहिए, आपको साइन और कॉस की वैल्यूज जब आपके ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं तब क्या होता है, एरिया का एक फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए. सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स. ट्रिग्नोमेट्री में काफी चीजें हैं. So let's finish with this cosine rule, then we'll talk about a few other things. Cosine rule, basic आपकी ये तीन चीजें जिसके ऊपर आपके पास सारे यूज होते हैं. ये क्या आती है, BC की वैल्यू क्या आती है, 136 minus 120 cos 65. Manahil, you are going to tell me what this value is. Evaluate करें calculator पे. Tell me what this is. (136 minus 120 into cos of 65). It should be 85.28. 85.28.
No, Wahaj, we haven't talked about that yet. So apparently this class is going to be a bit longer. We will take we'll take a few extra minutes at the end, and we will be doing some extra things. Okay, BC accuracy. Okay, good. 85.28. 85.28. Okay, so that's your cos. That's how you use cosine. अच्छा, एक तो ये तरीका होता है. कभी-कभी ये भी होता है आपको एक angle missing होता है. You have three sides given. Okay, so that's sometimes confusing to some people. Let's take one example like that as well. So let's say you've got this triangle. ठीक है. और आपको क्या पता है? You know the three sides. You know that this side is 6, this side is 8, and this side is, let's say, 10. You know three sides of the triangle. Okay, yeah. So Manayil, 85.28 का स्क्वायर रूट वो क्या आता है? स्क्वायर नहीं लिया था अभी आपने? स्क्वायर रूट लेके क्या आता है? 9 point something. Yeah, so 85 was a really big value there. Yes. Square root लेके क्या आता है? 9.23. Okay, so 9.23. And whatever the unit is. Yeah, so BC is actually 9.23, not 85. That should have, clicked there as well. Okay, बाकी साइड इतनी छोटी हैं. This is 10, this is 6. जाहिर है आपकी तीसरी साइड 85 तो नहीं हो सकती थी. That turns out to be 9.23 there. Yeah, thank you. Okay, let's say you've got these three sides. You've got 6 and 8, and let's say this is 12. And you're asked to find one of these angles. आपको कहते हैं ये angle figure out करो. What is this angle? Okay. Now again, you don't have any pair. आपके पास pair नहीं है कोई भी किसी side और angle का. आपको नहीं पता कि कोई side है उसके opposite angle क्या है. You don't have that information. वो information आपके पास नहीं है. ठीक है? Sine rule नहीं use कर सकते. कोई pair of sides and angles नहीं आते. ठीक है? अच्छा, cosine rule. Cosine rule क्या होता था? This is a square equals b square plus c square minus 2bc into cos of a. आप लोगों ने इसकी एक और representation भी शायद पढ़ी होगी. Some people tend to remember that as well. So if you can remember that's good. But if you don't, आप इसी को भी use कर सकते हैं. So दूसरी representation basically इस तरह होती है. मैं इसको लिख सकता हूँ cos of a is equal to b square plus c square minus a square. जो आपको angle figure out करना होता है divided by 2bc. If you remember this, that's good. If you don't, that's perfectly okay as well. आप ऊपर वाली representation को ही use कर सकते हो यहाँ पे भी. आप कह सकते हो उसी के अंदर वैल्यूज इनपुट करते हैं. लेकिन वैल्यूज इनपुट करते हुए यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल. वैल्यूज इनपुट करते हुए यू गॉट टू बी अ बिट केयरफुल कि जो लेफ्ट पे साइड आ रही है उसके ऑपोजिट एंगल यहां पर होना चाहिए. उसके ऑपोजिट एंगल यहां पे होना चाहिए. Can you guys hear me by the way? Can somebody confirm again? Can you guys still hear me? Okay, good. Thank you. Minahil, why can we apply that formula? बेटा आपको सबसे पहली चीज आपको ये बताई थी. सबसे पहली चीज आपको क्या बताई थी? Sin, cos, tan सिर्फ कब यूज होंगे? When we have right angle triangles. If we do not have a right angle triangle, sin, cos, tan हम ये वाली चीजें ऐसे नहीं यूज कर सकते. It's important to have 90 degrees here. Minahil, how did you guess that? How did you guess that? फिगर को देख के आपको लग रहा है शायद वहां पे, लेकिन इट्स नॉट. इफ इट्स नॉट गिवन यू कैन नॉट अज्यूम दैट. खुद से अजम्पशन नहीं लेनी, अज्यूम नहीं कर सकते. और 90 डिग्रीज अगर आप ये वैल्यूज देखें इन पे नहीं बनता 90 डिग्रीज. सो डू नॉट टेक दैट अजम्पशन. ठीक है, अज्यूम नहीं करना. इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल. अगर आपको फिगर से लग भी रहा हो यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा. अगर 6, 8 और 10 होता ना नीचे, अगर 10 होता नीचे, then it would be a right angle triangle. In this case, this is not a right angle triangle. अपने फिगर को देख के खुद से जो है वो guess नहीं करना, measure भी नहीं कर सकते because that's not. Figures are not generally drawn to scale in the paper. It's not 90 degrees. It's not 90. Okay. If it's not given, you do not assume that. Okay. अच्छा, अब हम क्या करेंगे? We use this formula. Okay, we've got three sides, so let's call this A, let's call this B, let's call this C. अच्छा,
नाउ 3 साइड्स हैं हमारे पास, एंगल कौन सा फिगर आउट करना है? एंगल हमें फिगर आउट करना है ये वाला। जो एंगल आपको चाहिए उसके ऑपोजिट साइड, रिमेंबर आपके पास इस इक्वेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे होती है। लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? लेफ्ट साइड पे आएगा 6 का स्क्वायर। एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो यहाँ पर आया करेगी लेफ्ट हैंड साइड। ये ध्यान रखना आप। बाकी दोनों साइड राइट पे आ गई, सिर्फ एक 8 है, उस पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक 12 है, -2 into 8 into 12 into cos of that angle। ये आपको इवैल्यूएट करना है, बस यहाँ से cos की वैल्यू आ जाए। ठीक है, इसको रीअरेंज कर लें, देख लें क्या आता है। सो 36 होता है 6 का स्क्वायर -64 -144 is equal to -16 into 12। 16 into 12 is 192 into cos of theta। ठीक है, यहां से क्या होएगा? यहां से आपके पास आ जाएगा cos of theta equals something 36 -64 -144। ये देखें क्या आता है, 36 -64 -144 -172। -172 divided by -192, so essentially get cos of theta equal to 0.8958, 0.895 and 8। यहाँ से बस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप कैलकुलेट से इवैल्यूएट करेंगे, we'll get a result for theta from there। So what do you get? थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आती है? Cos inverse of 0.8958। So I'm getting 26.4 degrees. 26.4 degrees. That's the angle. That's the value of the theta there. Okay? I hope this makes sense to everyone. So that's how we use cosine rule and the sine rule. ठीक है, बेसिक जो मेन चीजें यहाँ पे जो टेक्निकल चीजें ज्यादा थी ना वो ये है। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें, बियरिंग्स क्या होती हैं, और हमारे पास couple of other things as well। So bearings हमने करना है, और अभी और हमने देखना है या 90 और 180 वाला वो देखना है, ऑब्ट्यूज एंगल्स वाला, और हमें एरिया का फॉर्मूला एक होता है वो देखना है क्विकली, a couple of 3-dimensional problems। Okay, -192 किस तरह से तरफा पॉजिटिव में कैसे हो जाएगा? राइट साइड पे था ना वो, देखें ये -2 into 8 into 12 था ना, तो जो यहाँ पे आके नीचे डिवाइड होगा, ये दोनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, वो कैंसिल होके बाद में आके पॉजिटिव होता है। पहले तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ था, पहले तो वो पॉजिटिव नहीं हुआ था। नो 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 स्टीफन, cos is not a number जिससे आप डिवाइड कर सकते हैं। We cannot do that। डिवाइड cos कोई नंबर तो नहीं है ना, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we are saying if cos theta is equal to 0.8958, that means theta is equal to cos inverse of 0.8958। That's what we're doing। ये आप evaluate करेंगे अपने कैलकुलेटर से, you get a value of theta from there। ठीक है, so that turns out to be, क्या मैंने बताया था आपको, that was 26.4 degrees। 26.4 degrees। Okay, so that's the answer। Yes, exactly, that's the inverse। Yes, inverse ही किया बिल्कुल। Okay, मुर्तजा बेटा, you'll have recording available afterwards। तो अगर आपकी कुछ बेसिक चीजें आपने पीछे से मिस कर दी, you can have a look at the recording again। ठीक है, जैसे लेक्चर खत्म होएगा आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। Okay, so that's how we use the cosine rule। अच्छा, now let's talk about a few other things। अच्छा, एक तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है bearing का। ठीक है, bearing क्या होता है? Let's talk about that। Let's talk about the bearing। Let me just upload a question for that and we'll use that here। Okay, so is this visible to everyone? This question here? Okay,
अच्छा, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। बेयरिंग होती क्या है, इसमें कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल एक तो मेजर कैसे करते हैं। मेजर हम करते हैं इसको हमेशा नॉर्थ के साथ। नॉर्थ क्या होता है, वर्टिकल लाइन टुवर्ड्स अपवर्ड्स। आपने डायरेक्शन आपको पता होगी, नॉर्थ इज अपवर्ड्स, right is east, left is west, downwards is south, right? So you've got these directions like this. जब भी आपने bearing measure करनी होती है ना, आप क्या करते हो, एक knot बनाते हो like this, ठीक है? Bearing के लिए what you always do is you always make a knot like this. So एक तो ये कि you start measuring from north, और यहीं पे मेंशन करते हैं start measuring clockwise from north. बेयरिंग के अंदर ना एक कन्वेंशन हम यूज करते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट तरीके होते हैं आपके एंगल्स मेजर करने के। you'll see later on in A levels, हम जनरली जो ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं ना, हम ये यूज करते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना हम एंगल मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। जनरली हम ये वाली कन्वेंशन यूज करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। बट दिस इज अनदर कन्वेंशन जो लोग पहले अक्सर यूज करते थे। आप कहीं पे वो सेल बोर्ड पे शिप में जा रहे होते थे, उसमें डायरेक्शन वगैरह मेजर करने के लिए, अच्छा सामने से हमें कितना राइट पे टर्न लेना है, कितना लेफ्ट पे टर्न लेना है, हमें बेयरिंग्स अक्सर यूज होती थी। व्हाट वी डू इज वी मेजर फ्रॉम द वर्टिकल, नॉर्थ बनाते हैं और यहां से हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमेशा नॉर्थ से डायरेक्शन एंगल मेजर करते हैं और क्लॉकवाइज करते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट, क्लॉकवाइज एंड फ्रॉम नॉर्थ। अच्छा, इसके साथ आपको वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वर्डिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब वर्डिंग का क्या मतलब है, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, ये उसने पूछा हुआ है पहले पार्ट के अंदर। इसमें आपने करना क्या होएगा, फ्रॉम का मतलब है फ्रॉम के बाद जो लेटर आ रहा है ना, दिस लेटर हियर, उस पे आपको नॉर्थ बनाना है। इस फ्रॉम के बाद जो लेटर आ रहा है उस पे आपको नॉर्थ बनाना है। तो ये मेक नॉर्थ एट बी and then you find the angle from that north to the line joining A and B. That's always the process that you follow for this. फ्रॉम के बाद जो लिखा होगा वहां पे नॉट बनाएंगे, उससे एंगल मेजर करेंगे उस लाइन का जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम मुर्तजा एंड राफे। सो व्हाट डू वी हैव टू डू हियर, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, बी के ऊपर नॉट ऑलरेडी बना हुआ है, उसने आपको बना के दिया हुआ है, वहां से क्लॉकवाइज मेजर करेंगे टू द पॉइंट वेयर यू मीट द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ये एंगल आपको फिगर आउट करना, ठीक है। And as Manahil and Noreen have rightly pointed out, this angle turns out to be 220. How? Let's extend this line like this. Extend कर देते हैं. It's a vertical line. अगर ये angle 40 है यहाँ पे, तो ये जो angle ये कितना आएगा? This is also 40. ये angle 40 है और ये आपको पता है angle on a straight line. This is 180. ये 180 है. 180 और 40 को आपने add कर लिया, you get 220. Okay, 180 40 को add किया, you get 220. So that's what you get. 90 plus 90 plus 40, yeah, that's the same thing. You can also do that. So that's the first part. Okay, so you get 180 plus 40, that is 220. अच्छा, इसमें एक और चीज होती है बेयरिंग के अंदर, you always write 3 digits. ठीक है, that's a convention. आपने 3 digits लिखने होते हैं। तो अगर आपका बेयरिंग लेट्स से 20 डिग्री से बन रहा हो, आपने 020 लिखना है, राइट। 0 पहले डाल देते हैं,
थ्री डिजिट्स के अंदर लिखते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, C from B, C from B, again नॉट इज गोइंग टू बी ऑन B, B के ऊपर नॉट आपको नजर आ रहा है वहां पे, इससे आपने एंगल मेजर करना है कहां तक, द लाइन जॉइनिंग B and C, ये एंगल चाहिए आपको, ओके। हाउ डू यू फाइंड दिस एंगल? नाउ अगेन लेट्स यूज द सेम थिंग हमने पहले किया था, लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन हियर, this angle was 40 degrees. Why? Because ये alternate angles हैं, this angle 40 and this angle 40, these are alternate angles. If this angle is 40, that means ये हमारे पास ये वाला angle है, this angle here, how much should that be? B के ऊपर 90 बन रहा है, देखें rectangle है, it's the 90 degrees angle. अगर ये 40 है तो बाकी कितना बचा 90 में से, that's 50 exactly, so that's 50, you got 50 here. So what is that bearing now? जो ऊपर वाला एंगल था C from B, ये बेयरिंग कितनी बनी, दिस इज 180, जो आपकी स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है, उसमें से 50 आपने माइनस कर दिया, दैट गिव्स यू 130 डिग्रीज। वेरी गुड लाइबा, दैट्स व्हाट यू गेट। सो 180 डिग्रीज, यहाँ पे इट्स अ वन मार्क क्वेश्चन के अंदर आपको वर्किंग शो करना जरूरी नहीं होता, यू जस्ट राइट डाउन द आंसर देयर, सो दैट्स 130 डिग्रीज, दैट्स द बेयरिंग, 130 डिग्रीज, ओके। सो दैट इज व्हाट वी डू हियर। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहता है, अच्छा मुझे लेट मी रिपीट, आप देखें, यू अंडरस्टैंड दिस मच राइट? आपको सबसे पहले तो ये बेयरिंग क्या है, C फ्रॉम B, B के ऊपर नॉट बनेगा, उससे आपने C का एंगल फाइंड करना है, दिस एंगल हियर, ये एंगल फिगर आउट करना है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये एंगल किस तरह फिगर आउट करें, वी नो दैट दिस एंगल इज 40, Why? Because these are alternate angles, ये भी 40 है, ये भी 40 है, और ये पूरा एंगल 90 है, इस रेक्टेंगल के अंदर ये पूरा एंगल 90 है। अगर ये 90 है तो उस 90 में से हम ये 40 सब्ट्रैक्ट कर दें, we get this remaining angle, that is 50 degrees, ठीक है। अगर ये 50 है तो बाकी कितना बचा हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 होता है, 180 में से हमने 50 माइनस कर दिया, तो we get 130 from there. So this result is 130 degrees, okay. All right, so next is C from D, C from D, okay. Now yeah, so Manal is saying 90 degrees, let's think about this again, C from D. Now remember, जिस पॉइंट से आपको मेजर करना होता है, फ्रॉम के बाद जो आ रहा होता है उस पे आपको नॉट बनाना है, नॉट इज गोइंग टू बी एट D now, D के ऊपर आप इस तरह से नॉट बनाओगे, this is your knot, okay, this is your knot. आपको एंगल क्या मेजर करना है, this is the angle that you need, this angle here, ये एंगल आपको चाहिए, ये एंगल कैसे फिगर आउट करें आप, that is what we have to think about, ये एंगल फिगर आउट करना। So what do we do for this, what can we do for this, how do we figure this angle out? Okay, let me think about it. We have this side, अगर उसको extend कर दें, we will find that angle, and yeah, so let's do this. So there could be multiple ways of thinking about this. One possibility could be कि आप ये इसको extend कर दो. So I'm just going to do it once here myself, and then I'll take your opinion as well. So if this is 40, अगर ये ऊपर वाला 40 था एंगल, ये 90 है, तो ये बाकी कितना बचा हमारे पास, ये एंगल कितना बचा, ये एंगल हमारे पास कितना बचेगा, this is going to be 50 degrees. 180 में से हमने 40 माइनस किया और 90 माइनस किया, that's going to be 50 degrees. If this angle is 50, ये एंगल जो ये वाला बन रहा है, this is alternate to this angle, ये जो आपको यहाँ पे एंगल नजर आ रहा है, so alternate to this angle, ये भी 50 होएगा फिर, this is also 50, and if that is 50, we subtract this 50 from 90 to get that angle, ये वाला एंगल जो हमारे पास बाकी बच गया वहां पे, this is going to be 90 minus 50 and that is 40 degrees, ठीक है। हम इसको एंड पे कैसे लिखेंगे बेयरिंग को, it's going to be 040, ठीक है, आप 3 डिजिट्स पे लिखते हो, so it's going to be 040 degrees, exactly, very good. So that's your bearing. The first part, A from B, is that what you're asking about, Stephen? A from B? Okay. So
Walaikum assalam, Umama. Let's go back to the first part. Let's erase everything there. A from B. A from B का क्या मतलब है? B पे नॉट है, ठीक है? आपको ये एंगल चाहिए पूरा. You need this whole angle. ठीक है? You know the angle on the straight line is 180. इतना part कितना है? 180. Straight line तक. ये वाला part. बाकी कितना बचा? This part here. What is this part? It's alternate to this angle. If this is 40 degrees, this is also going to be 40 degrees. ये भी 40 है, तो 180 में आप क्या करोगे? 40 add कर दोगे, and that is your 220 degrees. So you basically use this alternate angle. This is 40, that is also 40. So हमने वो add किया, you get 220 from there. 360 minus 140, exactly. So Laiba, you can also do that. So that's also perfectly fine. You can say that if this angle is 40, you can say this is 40. This is 40. If this is 40, that means the remaining angle here is 140. So you say 360 minus 140. That will also be 220. That's also perfectly fine. Okay, so that's how you deal with bearings basically. कभी आपको measure करना होता है, कभी आपको calculation से करना होता है. But understanding that terminology is important. कि from के बाद जो आया होता है, वहाँ पे आप not बनाते हो, फिर वहाँ से clockwise angle measure करते हो. अच्छा, let's talk about the next thing. So we've talked about bearings. Yeah, so obtuse angle. So this is another thing that confuses a lot of students. So let's think about this example. Actually, before I go to that, let me just explain a relationship that you need to know of, and that is sine of. So you would have seen these equations at different places. Let me just explain to you in simple terms what they really mean. आपने देखी होंगी equation sine of 90 minus theta equals cos theta, cos of 90 minus theta equals sine theta. Now what does that really mean? ये दो equations आपको पता होनी चाहिए. इसके साथ साथ आपके पास दो और equations हैं आपको पता होने चाहिए. एक तो है sine of 180 minus theta is equal to sine of theta. ये भी आपने पढ़ा होगा. एक आपने और किया होगा sine cos of 180 minus theta is equal to minus cos of theta, right? I'm sure all of you have done these equations. If you've covered your syllabus, ये आपने ये वाली equations की होंगी. Now, how do we use them? इनको ये हमने पढ़ी तो ही है, लेकिन it confuses a lot of people. इनको use कैसे करना है, इनको क्या करना है? अच्छा, पहले जो आपके पास सेट है ना, ये जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, इसका सिर्फ मतलब ये है, इसका सिंपल मतलब ये है, आपके पास कोई एंगल है ना, लेट्स से मैं एक एंगल लेता हूँ 30 degrees, ठीक है, sine of 30 degrees, और let me do it this way. तो आपके पास कोई भी दो एंगल्स हैं जिनका सम जो है ना वो 90 है. सो एक एंगल अगर आपके पास 30 है, दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? 60 डिग्रीज, ताकि उनका सम 90 बने. अगर एक एंगल आपके पास 20 है, दूसरा एंगल क्या होना चाहिए? 70 degrees. Sum 90 होना चाहिए, total 90 होना चाहिए, ठीक है? If you have another angle, let's say that is 40 degrees, दूसरा क्या होना चाहिए? That should be 50 degrees. If you have one angle that is 75 degrees, दूसरा क्या होना चाहिए? That should be 15 degrees. अभी जो पहला set of equations है ना, ये हमें क्या बताता है? इनके एक का जो sin है वो दूसरे का cos है. So basically sine of 30 is the same thing as saying cos of 60. Or you can also do the other way around. Cos of 30 is equal to sine of 60. If there are two angles, जिनका sum जो है वो 90 है, दो angles हैं उनका sum 90 है, एक का जो sin होगा वो दूसरे का cos होगा. यहाँ पे लिख सकते हैं sine of 20 is the same thing as saying cos of 70. Sine of 40 is the same thing as saying cos of 50. Cos of 75 is the same thing as saying sine of 15, and so on. You can also verify these from your calculators. So अगर आपको उसने आपको बताया हो sine of 20 is equal to something. So sine of 20 is equal to let's say whatever that is. आप
कैलकुलेटर में देखें sin 20 क्या होता है। ज्यादा वैसे इस तरह के पेपर 1 में आते हैं, लेकिन पेपर 2 में इसकी वेरिएशन के हो सकता है फिर भी। सो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एट लीस्ट। साइन ऑफ 20 क्या होता है? 0.342। साइन ऑफ 20 इज 0.342। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये है कि cos ऑफ 70 जो होगा ना, दैट विल आल्सो बी 0.342, वो भी 0.342। ठीक है, cos of 70 वो भी 3.342। yes, Shivam, that's correct. Shivam or Shivam, that's correct. Sin of 160 भी हो सकता है, that's coming from here, और cos of 70 भी हो सकता है, that's very good। अच्छा, तो ये चीज कि दो एंगल जिनका सम 90 हो, एक का साइन दूसरे के cos के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपको ये पहली वाली साइड ऑफ इक्वेशन ये बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अभी दूसरी वाली साइड ऑफ इक्वेशन। वालेकुम अस्सलाम अली से। यस अली, you want to say something? दूसरी वाली साइड ऑफ इक्वेशंस क्या बताते हैं? लेट्स थिंक अबाउट दिस। अच्छा ये ना आप ए लेवल्स में जाके इसको तो और डिटेल में पढ़ोगे, और दोस्त यू हैव डन एडवांस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल एक सिंपलिस्टिक सिनेरियो लेते हैं, और भी ये होता है कि आपके पास कोई भी अच्छा सॉरी आई मिस्ड दैट मैसेज। यस लाइबा, दैट्स करेक्ट। सो इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर एंगल्स लेस देन 90। ये एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड है, राइट? एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइन करते हैं, इवन दो दैट वर्क्स फॉर ऑल एंगल्स। हम यहाँ पे एक्यूट के लिए यूज कर रहे होते हैं, इट वर्क्स फॉर ऑल एंगल्स। वो आप बाद में देखोगे, इट वर्क्स फॉर ऑल एंगल्स, इट डज वर्क फॉर अदर एंगल्स एज वेल। एट लीस्ट वन ऑफ दीस इक्वेशन, नॉट बोथ। एक इक्वेशन इनमें से सारे एंगल्स के लिए चलती है, लेकिन अभी के लिए यू कैन जस्ट अज्यूम कि थीटा एक्यूट है, कि वो नेगेटिव में ना जाए, because हम नेगेटिव एंगल्स का एट दिस पॉइंट वी डू नॉट नो अबाउट दैट, राइट? हमने अभी तक ओ लेवल्स में नहीं किया हुआ। अच्छा, sin of 180 minus theta equals sin theta, cos of 180 minus theta equals minus cos theta। इसका क्या मतलब है? हमारे पास दो एंगल्स हैं, उनका सम जो है ना, या इस तरह समझ लें इनको, एक्यूट होते हैं ना, या इस तरह समझ लें, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। लेट्स डू इट दिस वे। साइन जो होता है ना और कॉस जो होते हैं, साइन एक्यूट एंगल का भी पॉजिटिव होता है और ऑब्ट्यूज एंगल का भी पॉजिटिव होता है। Sin is positive for both of them। जो cos होता है ना, वो acute एंगल का तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल का नेगेटिव होता है। ऑब्ट्यूज एंगल का cos हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब corresponding values of acute and obtuse angles हम किस तरह से फिगर आउट कर सकते हैं? If we have, for instance, sine of an acute angle, sine of let's say 50 degrees, ये हमें पता है कि this is equal to some value, right? So let's say sine of 50 degrees, let me see what that is. Sine 50 is 0.766. This is 0.766. अब अगर इसको यूज करके वो आपसे पूछता है what about sine of 130 degrees, तो ये 130 जो है ना, ये 50 को कॉरेस्पॉन्ड करता है। 50 जो एक्यूट एंगल है ना, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल होएगा, that will be 180 minus 50, and that gives you 130 degrees। इसकी वैल्यू भी वही होगी जो वहां पे थी। ठीक है, अब बस कोई एक्यूट एंगल है, so let's say we have one angle that is 70 degrees। इसका जो corresponding obtuse angle होगा, that will be 180 minus 70, that will be 110। अगर बस एक एंगल एक्यूट होता, that's 40। उसका जो corresponding obtuse angle होता, that will be 180 minus 40, and that is 140। इनकी मैग्नीट्यूड्स हमेशा इक्वल होते हैं। sin 50 0.766, sin 130 भी वही होएगा। इस तरह से cos 40 में बताऊं आपको, cos 40 होता है 0.766, sin 140 जो उसका corresponding एंगल है, corresponding obtuse एंगल है, वो भी 0.766 ही होगा। लेकिन cos के केस में, सॉरी ये cos होना चाहिए था यहाँ पे, cos के केस में क्या होता है? cos के केस में होता यह है कि आपका साइन नेगेटिव हो जाता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, ये माइनस बन जाता है, -0.766। ठीक है, तो cos 40 जो होएगा
cos 140 will be minus whatever that was. ये अगर 0.66 है तो cos 140 minus 0.766. ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पेपर 1 में आते हैं. तो let me just show you, give you one example, और मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ. Did I actually show that to you? No, not yet. अच्छा, let's quickly do this. So next पे move करते हैं. We'll do one question that covers a number of concepts. Then we will end after that. It's been a long class. So let's say you got this information. ठीक है, आपसे ये again ये paper 1 का question है वैसे तो, but it clears the concept. आपको पता है कि 2 sin 150 figure out करना. वो कहता है कि use as much information from the table to find this. Evaluate this 2 into sine of 150. ठीक है. अच्छा, sin 150 obtuse angle आपको figure out करना है. Sin 150 इसका acute इसका corresponding acute angle क्या होएगा? Sin 30. 180 में से minus कर दिया, 180 minus 150. What's that? That is 30 degrees. तो sin 30 की जो वैल्यू है वही sin 150 की वैल्यू होगी. Sin 30 की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? 0.5. We just say this is the same thing as saying 2 into sine of 30, and that is 2 into 0.5, which is equal to 1. ठीक है, इस तरह उसने आपसे पूछा होता what about cos of 120? Cos of 120 क्या है? Anyone? Cos of 120, what is that? Based on this table that is given. Cos of 120. How do you figure that out? 0.5 minus 0.5. Yes, exactly. So 120 का corresponding आपका क्या होएगा? Acute angle, that is 60. Cos of 60. लेकिन cos के केस में sin चेंज हो जाता है. obtuse का नेगेटिव होता है. So you got minus there. That's minus 0.5. ठीक है, अब उसको अगर आपको वो याद है, आप उसके अंदर वैल्यूज डायरेक्टली इनपुट कर दो. Cos 180 minus theta equals cos of theta minus cos of theta. 120 को आप कहीं भी इनपुट कर दो, आप उसको यहाँ पे थीटा की जगह 120 इनपुट कर दो, या थीटा की जगह 120 इनपुट कर दो, और यहाँ पे भी 120 इनपुट कर दो, तब बस वो वैल्यू भी आ जाएगी. ठीक है, किसी के अंदर भी आप या 120 इनपुट कर दो, 60 इनपुट कर दो, both will give you the same result. You want to refresh, that might help. Okay, good. Okay, so we have we talked about this, how to use the sine and cos and obtuse वाली thing. Let's quickly do one more thing before we move to the last question that we want to do for today. Can you guys still hear me? Can you guys still hear me? Okay, good. Achha. So let's look at this question. This is a question again that you might have seen before in the past papers, and it's a bit confusing sometimes. So you're given cos of y is equal to minus 0.54. Okay, cos of y is given to be minus 0.54. Alize, we have done coordinate geometry before, and this is the second thing that we're doing, and we'll do 4 to 5 more topics in fact 6 more topics over the next weekends that we have before the exam. In this group, we have classes every Monday on this group, and the other 4 days in the week we have classes in the other group in which we cover past papers and some more practice questions on these topics that we're doing. Right, so that's happening in the other group. यहाँ पे हमारी Monday को class होती है सिर्फ every Monday, and in which we cover these different concepts. Okay, so one solution of this equation, cos of x equals 0.54, is x equals 0.57. Now this is something that can come in paper 2 as well, right? So यहाँ पे जरूरी नहीं है कि paper 1 में, this can come in paper 2 as well. So cos of y is given to be minus 0.54. एक एंगल है जिसका cos आपके पास आ रहा है minus 0.54. ओके, minus 0.54. अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अभी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स होंगे जिनसे डील कर रहे होंगे. वन इज एक्यूट एंड द अदर इज ऑब्ट्यूज. साइन जो है दोनों में पॉजिटिव होता है, कॉस जो है वो एक्यूट में पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव होता है. यानी कि जो y है ना यहाँ पे, उसने यहाँ पे दिया भी हुआ है, यहाँ पे y is an obtuse angle. It's between 90 and 180. अच्छा, वो क्या कहते हैं, one solution of this equation, cos of x, अब x कोई और है, x कोई और वेरिएबल है, cos of x is equal to 0.54. इसका जो सोल्यूशन है, इसके अंदर x की वैल्यू क्या है,
x की वैल्यू इज 57, यानी कि cos of 57 is equal to 0.54. That is what we are given. किस एंगल का cos जो है वो -0.54 होगा? अब देखिए नंबर वही है, number is not changing. It's the same magnitude there, 0.54 there and 0.54 here. ठीक है, same magnitude, सिर्फ क्या हो रहा है, साइन चेंज हो गया है, साइन नेगेटिव हो गया है. And remember when did this used to happen? This used to happen जब हमारा एक एक्यूट एंगल होता था, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्ट्यूज एंगल होगा, that will be 180 minus 57 and that will be 123 degrees. That is the angle that we have here, 123 degrees. Okay, is this clear to everyone? Is this clear to everyone? All right. Okay, good. Now, there's one more thing, and that's the last thing in terms of concepts. पे एक 3D वाला एक question हम देखते हैं, and उसके बाद, but before I go to that, let me just quickly tell you about this formula that we have for finding angles. Umama, let me just answer your question in a moment. Okay, so let's say we have a triangle like this. Okay. Now, again, it looks like a right angle. आप लोग कहेंगे कि ये तो right angle triangle है. So let me just change that a bit. So let's make it something like this. Oops, now this is not right angle. Achha. Let's say we've got two sides here. This is 24 and this is 35. And we have an angle between them. This angle is, let's say, 60 degrees. This is A, this is B, this is C. Okay, what about the area of triangle A, B, and C? This triangle area हमें figure out करना. Remember, there's one formula of area of triangle that we've done before, that you should already know before. That is half into base into height. ये तो आपने किया हुआ पहले, ठीक है, आपको पता है half into base into height. That's the area of a triangle. लेकिन यहाँ पे height क्या होती है? Height होती है perpendicular height. This is your perpendicular height. ठीक है, ये हमारे पास होती है परपेंडिकुलर हाइट. यानी कि अगर हम 35 बेस लेते हैं तो हाइट क्या होगी? ये हमारी हाइट होगी. दिस इज द हाइट. ओके, ये हमारी हाइट. अब ये हाइट कैसे फाइंड करें? हमें पहले यहाँ पे पाइथागोरस, हमें वो रेशियो लगानी पड़ेगी, साइन लगाना पड़ेगा. साइन यूज करके हम ये साइड फिगर आउट कर सकते हैं. Right? That's one possibility अगर आप half into base into height यूज करना चाहते हैं. लेकिन हमारे पास एरिया का एक और फॉर्मूला है, and that is given by this: half into AB sine of C. आप लोगों ने कुछ लोगों ने इस तरह में पढ़ा होगा, half into XY into sine of theta. Right? इसमें होता क्या है, कोई भी ट्रायंगल आपके पास हो, उसमें दो साइड्स आपके पास हो, दो साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम, द एंगल बिटवीन दो साइड्स. अगर एंगल ये वाला होता आपके पास, फिर नहीं आप कर सकते. अगर 30 डिग्री से साइड वाला दूसरे वाला एंगल दिया होता, देन यू वुड नॉट बी एबल टू यूज दिस फॉर्मूला. तो उसमें आप ये नहीं यूज कर सकते, तो उसका फिर आप एरिया निकाल ही नहीं सकते थे. दैट वुड नॉट बी पॉसिबल अगर उसने सिर्फ वो 30 दिया हुआ है. ये उसने 60 दिया हुआ है. दिस इज द एंगल बिटवीन दोस टू साइड्स. 35 और 24 के दरमियान वाला एंगल 60 है. इस तरह के केसेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं? यूज दिस फॉर्मूला, हाफ एक्स वाई या ए बी, ये हमारे पास दो साइड्स हैं, 25 into 24 into 35. And then sine of the angle between them, that is 60 degrees. That will be the area of this triangle. ठीक है, इस तरह एक ट्रायंगल के एरिया फिगर आउट कर सकते हैं. ओके,
I see some of you raising hands. I'm sorry, I'm not getting the option to accept your hand raise. ना interface थोड़ा change किया है अभी recently, so I can't really find how to accept your request. So इसमें option नहीं आ रही, मुझे नजर भी नहीं आ रहा वैसे किसने hand raise किया हुआ है. So it's not available here at the moment, unfortunately. If you have a question, you can just write that down, and that might be quicker. It might be easier. अच्छा उमामा, Mondays को हमने अभी तक coordinate geometry किया है. Then today we did trigonometry. अब next few classes के अंदर हमें कुछ major topics cover करने हैं. One is mensuration, okay. Then we have kinematics, we have vectors, we have transformations, we have statistics, जो आपने वो mean, median, mode की calculations, histogram, frequency, cumulative frequency curves वगैरह. So these are some 6 topics that I have in mind that we are going to be doing. Okay. In this Monday wala group. Okay. In the other group, so we are going to be doing more practice on these topics. और वहाँ पे हम past paper sessions जो हैं वो past papers कर रहे हैं, recent past papers. So that's starting from tomorrow. This group is free every Monday, almost the same time, 4:15 type start होती है class. The other group is paid. That's 4 days a week, but we're going to be doing a lot of practice there, a lot of past paper questions, a lot of practice on these topics as well. So that is what we're going to be doing in the other session. Okay. Umama, that's 6,000 for the whole session. So until your exams and during the exams as well. So that's a 6,000 for the whole about 1.5 to 2 months, right? So total 6,000. But this group is totally free, and which we're going to be covering the concepts. Okay, यहाँ पे concepts यहाँ पे discuss करेंगे for these major topics. Okay. All right. Acha, let's do this. Let's do this. This covers most of these concepts now that we have discussed. और इसमें कुछ एक दो चीजें और भी आती हैं. एक angle of elevation का concept, so angle of elevation और depression को हम देख लेते हैं एक दफा साइड पे, और फिर 3D के अंदर कुछ complications आती हैं. वो हम यहाँ पे इस question के अंदर थोड़ा सा basic discuss करते हैं, and then we will end it here. And we'll be doing more practice in this on 3D figures as well in the other group. But for now here, we will stop here. Next session, inshallah, we will be doing the next topic, and that should be mensuration, I think. Yeah, so I'll also announce that on the group. Next class, mein kya kare. Statistics, Stephen, we're going to go in order. So generally, mensuration is covered in grade 10. At most schools, so वो मैं पहले करना चाह रहा हूँ. So once you've done mensuration, statistics, transformations, and vectors, generally that is covered, and loci as well. That's generally covered in the last year. So we will cover that over the next weekend. So हम ये कर सकते हैं कि after the next session, mensuration हो जाए जब हमारे पास, तो mensuration के बाद we can do statistics. So the week after that, that is something that I can think about. So that's what we can do. Achha, let's quickly discuss angle of elevation and angle of depression. Now, let's say you've got a ground here, you've got a horizontal floor here, and you've got some sort of a building like this. Okay, iske upar, we've got some building, and you've got something. My drawing is not very good, so I didn't want to draw that. So let's say you've got this person. You've got this person standing. Is this a person? No. Let's say you've got some object placed here at the top. Okay? Or you can actually draw it like this. So you've got some object placed here at the top. Ab dekhein, there's a person that's, let's say, standing here at point A on the floor. A ke upar ek banda khada hua hai. Okay? And what that person is doing is, this person is looking at that object. यहाँ पे A पे खड़ा होके, this guy is looking at that object. ऊपर को देख रहा है वो. ठीक है? Now this is where the angle of elevation, the concept of angle of elevation comes from. That you're standing at this point A. आपका eye level क्या होएगा? Your eye level is this horizontal,
वैसे तो आप सीधे खड़े हुए आप हॉरिजॉन्टल देख रहे होते हैं ना, सो हॉरिजॉन्टल दैट्स योर आई लेवल। अब उस आई लेवल से, हाई लेवल इज दिस इज योर आई लेवल, दिस इज योर आई लेवल। अब आपको अपने आई लेवल से कितना ऊपर देखना पड़ रहा है, कितना आपको ऊपर देखना पड़ रहा है अपने आई लेवल से टू सी दैट ऑब्जेक्ट ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, कितना आपको ऊपर देखना पड़ रहा है। दिस एंगल हियर इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना आपको ऊपर देखना पड़ रहा है वहां से, दैट्स योर एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से कितना है, एंगल हमेशा कहां से होता है, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से कितना आपको ऊपर देखना पड़ रहा है, दैट्स योर एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली यू कैन आल्सो डू द अदर वे अराउंड, आपके पास ऊपर भी बंदा खड़ा हुआ है, यहां से ऊपर से आप नीचे देख रहे हो, आप यहाँ पे खड़े हो, आप ऊपर से आप देख रहे हो नीचे ए की तरफ, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी, बी से आप ए की तरफ देख रहे हो, अब बी पे आप खड़े हुए हो तो बी से आपका आई लेवल क्या आएगा, योर आई लेवल इज गोइंग टू बी लाइक दिस, बी के ऊपर खड़े होके योर आई लेवल इज लाइक दिस। आपको कितना नीचे देखना पड़ रहा है टू लुक एट ए, कितना आपको नीचे देखना पड़ रहा है, आई लेवल से इतना नीचे देखना पड़ रहा है। दिस एंगल हियर इज कॉल्ड द एंगल ऑफ depression. Okay, that's just the concept of angle of elevation and depression. The rest stays the same. आपको वही trigonometry लगा के कोई angle figure out करना हो सकता है, but this is just the terminology that you need to know of. Okay, अभी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे these are alternate angles, तो इनकी values equal होंगी। ये जो नीचे वाला angle है, it's the same as that upper angle. So most of the times your angle of elevation and the angle of depression, they're going to be equal because they're alternate angles like this. All right. Achha, let's look at this question. So this is the question that we're going to end at. Unfortunately, 3D के हम बहुत ज़्यादा practice यहाँ पे नहीं कर सके. We will do that the other group inshallah. Let's do this. Let's have a look at this one. So इसमें एक question at least हम करते हैं ताकि हमारे वो concepts clear हो जाए, सारे concepts cover हो जाए. We have this diagram ABC that represents a horizontal triangular field, and AD represents a vertical tree in the corner of the field. Okay. So ABC is horizontal triangle field. अब देखिए ABC है ना, this is horizontal. ये flat जमीन के ऊपर पड़ी हुई है triangle, right? It's on the floor. आप इस तरह इसको visualize इस तरह करें कि जमीन के ऊपर horizontal triangle पड़ी हुई है, ठीक है? जमीन के ऊपर horizontal आपकी ये triangle पड़ी हुई है, लेकिन अब ये जो ऊपर है AD, इट्स अ वर्टिकल ट्री। वर्टिकल ट्री का क्या मतलब है, ए के ऊपर आप इस तरह समझो कि ए के ऊपर आप खड़े हुए हो, जमीन के ऊपर आप खड़े हुए हो, देखिए आप वर्टिकल हो और ये ट्रायंगल नीचे हॉरिजॉन्टल है। ABC इज हॉरिजॉन्टल जमीन के ऊपर और AD आप इस तरह से वर्टिकल खड़े हो। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ABC इज इनसाइड द स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर है, और ये AD एक तरह से बाहर आ रहा है आपकी तरफ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो एक जब भी आप इस तरह से 3D की शेप में होते हो ना, तो जिस पॉइंट के ऊपर कोई वर्टिकल चीज होती है ना, फॉर एग्जांपल A के ऊपर यहाँ पे वर्टिकल चीज, इस पॉइंट के सारे एंगल्स 90 बन रहे होते हैं वर्टिकल के साथ। देखें DA के साथ जो एंगल्स बन रहे होंगे ना सारे DAB, ये तो उसने आपको दिया हुआ है, ये तो 90 है, बट एट द सेम टाइम द एंगल DAC that is also going to be 90। कोई और भी पॉइंट होता है यहाँ पे, लेट्स से मैं आपको x पॉइंट लेता हूं, DAX, ये भी 90 होता। तो DA के साथ यानी A के ऊपर जो भी एंगल्स बन रहे होंगे ना, वो सारे आपके पास 90 डिग्रीज होंगे। द रीजन फॉर दैट इज DA जो है वो वर्टिकल है, वो ऊपर को खड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सारे पॉइंट्स आपके पास जमीन के ऊपर है, तो A के साथ जितने भी वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल्स बन रहे होंगे वो सारे 90 होंगे। वो भी 90 है, ये भी 90 है। ये चीज ना काफी लोगों का मसला होता है इसको विजुलाइज करने में, तो ये आपने इसका ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट के ऊपर कोई वर्टिकल चीज खड़ी होती है ना, उसके साथ हॉरिजॉन्टल पे सारे एंगल्स 90 बन रहे होते हैं, राइट। तो ऊपर टॉप से लाइन आ रही होती है DA, दैट्स द लाइन हियर DA। DA के साथ जितने भी एंगल बनेंगे ना हॉरिजॉन्टल के अंदर, they will all be equal to 90 degrees।
Is this concept clear? Because this is the main thing that you need to know about 3D trigonometry, 3-dimensional trigonometry, कि ये एंगल हमेशा आपके पास इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर 90 बनते हैं सारे. तो DAB भी 90 है. ये अगर DAX में इस तरह से एक बना देता, X पॉइंट खुद से डाल देता, this angle will also be 90 and so on. Is this clear to everyone? Any issues with this? Any issues with this? No? सबको क्लियर है? Abu Bakr, I'm not sure if I understand your question correctly. Maybe you can rephrase that. I don't understand correctly. Now let's see what we are asked to find out here. So let's be quick about this. सबसे पहले वो कहते हैं angle of elevation. Let me just erase the previous thing that I've written down there. Okay, we've got this information given. Now, first of all, we have the lengths given. AB length दी हुई है, उसने आपको AC length दी हुई है, उसने आपको angle BAC दिया हुआ है, और आपको ये angle DBA भी दिया हुआ है. That's the angle of elevation of the top of the tree when viewed from B. That's 14 degrees. Okay. ये angle 14 है, ठीक है. आप इसको इस तरह समझें. This is basically a right angle triangle like this. आपको फिगर के अंदर वो इतना क्लियर नहीं है. आपने 3D के अंदर क्या करना है, अलग से ना इस तरह की ट्रायंगल्स बना लेनी है खुद से, ताकि आपको क्लियर हो कि सिचुएशन क्या है. This is a 90 degrees. DA is like this, और ये B जो है वो यहाँ पर है. This angle is 14 degrees. ठीक है. और उसने आपको क्या दिया हुआ है, AB length वो भी पता है, that is 83. तो आपको essentially find क्या करना है, height of the tree. Height of the tree is just AD. AD फिगर आउट करना है आपको. ठीक है. आप देखें 14 डिग्रीज के हिसाब से, this is your perpendicular and 83 is your base. Base और perpendicular में कौन सी रेशो कनेक्ट करती है? It's tan, right? Tan कनेक्ट करता है. Exactly. Tan connects the perpendicular and the base. So it's AD divided by 83. That is equal to tan of 14 degrees. Yes, very good, Laiba. That's correct. So AD turns out to be equal to 20.7 meters. That is the height of the tree. Okay? That's what you do in the first part. The height there is 20.7. So now we write there, this is 20.7. And it says calculate the length of the path BC. BC आपका एक path है, इसकी length calculate करनी है. Now again, it's a triangle. ABC. इसमें हमारे पास क्या-क्या information given है इस triangle में? We've got this length, that's 83. We've got this length, that's 46. We've got the angle between them. So ये वाली situation जब होती है ना, आपको rightly पता चल जाना चाहिए. Normally cosine use हो रहा होता है. Two sides and the angle between them. Two sides and the angle between them. Yes, correct, Rohit. That's cosine rule. Because कोई pair नहीं है हमारे पास. Angle side का pair हमारे पास कोई भी नहीं है. एक angle है, उसके opposite side नहीं पता. ये साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल नहीं पता. ये साइड है, उसके ऑपोजिट एंगल नहीं पता. साइन तो नहीं यूज कर सकते, वी यूज कोसाइन. लेट्स कॉल दिस x, जो हमें फाइंड करना है, BC. x का स्क्वायर इज इक्वल टू 46 स्क्वायर प्लस 83 स्क्वायर. कोसाइन रूल यूज कर रहे हैं. कोसाइन रूल क्या होता है? a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos of a. And that was the cosine rule. X square is equal to 46 square plus 83 square minus 2 into 46 into 83 into cos of 67. That is what you have. And we'll get the value of x from there. ठीक है. एक BC की लेंथ आ जाएगी, आप इवैल्यूएट कर लें, देखें क्या आता है. So Laiba is telling us that's 77.6 meters. Can somebody confirm this as well? Can I have a verification of this? Starting में evaluate किया ये. BC is equal to 77.6. 77.6. Okay, so I'll assume that's correct. So let's move on. ये हमारे cosine rule use किया सिर्फ, हमारे पास BC के लेंथ. ठीक है.
Let's move on. Next, what we have is we have to find the area of the field ABC. ABC का area find करना है. Again, fairly straightforward. Just the application of formula. Formula लगाने से आपने वहाँ से कुछ value आ जाएगी. So length हमारे पास आ गई है. ये तीसरी भी. This is 77.6. Okay. अच्छा. Area of ABC figure out करना है. So what do? We use the formula for the area, that is half into AB sine of C. AB क्या है? दो sides. C क्या है? The angle between those two sides. ठीक है? So half. कौन सी sides use करेंगे? Angle हमें 67 पता है. इसके साथ वाली sides 83 and 46. So we've got 83 into 46. Divided by, multiplied by sine of 67 degrees. And you get something from there. What do you get? इसका result क्या आता है? Yes, Bahir, that's correct. And Laiba as well. So that's, Laiba is telling us that's 1757. That is the area of that. Okay. Achha, now it's a bit tricky now. Calculate the shortest distance from A to the path BC. Shortest distance from A to the path BC. Now remember, जब भी shortest distance की बात होती है ना, yes, exactly. We talk about perpendicular distance. Shortest distance between a point and a line. अगर ये point है आपके पास, एक line है इस तरह से. इनके दरम्यान में बहुत सारे distances possible हैं. आप ये भी distance देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो. Shortest क्या होता है? Shortest हमेशा होता है जब उस point से आप perpendicular बनाते हो उस line के ऊपर. I can't even draw a straight line. Yeah, something like this. Perpendicular जब बनता है उस point से, that is the shortest distance. 90 degrees का angle बनना चाहिए वहाँ. तो A से BC पे shortest distance क्या होगा? You draw a line from that point to the line BC such that it makes a 90 degrees angle here. ये 90 degrees angle यहाँ पर बनना चाहिए. ठीक है? अब ये आप figure out कर लोगे ये length कितनी है. So you know that this angle is 60. अच्छा नहीं, angle आपको क्या पता है? ये आपको पता है side ये 46 है. The side is 46. And you also know कि हमारे पास yeah, so that's a good idea. So we can also use the area. Yeah. So one way could be कि हम यहाँ पे कोई और angle figure out करते हैं, but that would of course take a lot of time. So that is not a good idea. So that's a very good point. Laiba is saying we could use the area there. Area use कर सकते हैं because area का हमारे पास दूसरा formula remember क्या होता था? We have the base and the height. ये perpendicular height है basically जो आपको figure out करनी है. So area is also given by half into base into height. आपको height figure out करनी है वहाँ पे जो उसने कहा है. Area हमारे पास already है. That's 1757. इसको exact value use करें तो that was 1757.2. That is equal to half into base. That is 77.6 into the height, and that will give you the value of h from there. Very good. So that's your height from there. यहाँ से आप देख लेंगे आपके पास height क्या होता है. That's 1757 multiplied by 2 divided by 77.6. So you're telling me that is 45.3 meters. 45.3 meters. That is the height. ठीक है? So height हमारे पास यहाँ पर आ गई 45.3. Okay? अच्छा. Let's do the last part now. Now again, so there's another concept here. So this is a very good question. इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ address हो जाती हैं. Let's do this last part. Okay. अच्छा, last part में वो क्या कहता है? Calculate the greatest angle of elevation of the top of the tree when viewed from any point on the path. Path कौन सा है? Path is BC. BC के ऊपर आप different जगहों पे खड़े हो सकते. You can be standing here. Let's say यहाँ से कोई और angle होएगा, यहाँ से कोई और angle होगा, इस point से कोई और angle होगा, इस point से कोई और angle होगा, C से कुछ और होएगा, B से कुछ और होगा. Different points have different angles of elevation.
फॉर एग्जाम्पल बी पे खड़े होके मतलब दैट इज 14 डिग्रीज, ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना? तो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कब होएगा? नाउ थिंक अबाउट दिस, लेट्स कंसीडर द सिनेरियो, यू हैव, सो यू आर सिटिंग समवेयर, और आपके पास ये एक टावर है लाइक दिस, और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल, उसके नीचे ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल, उस टावर के नीचे देयर इज हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. नाउ थिंक अबाउट दिस, आपके टावर के ऊपर कुछ पड़ा हुआ है इस पॉइंट के, आप उसको देख रहे हो नीचे से, ठीक है? इफ यू आर हियर एट दिस पॉइंट, यहां से आप देखोगे आपको कितना ऊपर देखना पड़ेगा? एक एंगल होगा यहाँ पे, सर्टेन एंगल, आपको इतना ऊपर देखना पड़ेगा. लेट्स कॉल दिस एंगल समथिंग, लेट्स कॉल दिस थीटा. आप जितना करीब जाते जाओगे टावर के, जितना आप पास जाते जाओगे, लेट्स से यू कम टू दिस पॉइंट बी, आप और करीब होगे उसके, अब उसके करीब हो जाओगे तो ये जो नया एंगल होगा, अब दिस एंगल हियर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंगल? ये जो एंगल होगा, दिस इज गोइंग टू बी बिगर देन द प्रीवियस एंगल. जो भी पहले एंगल था, आप जितना टावर के करीब जाते जाओगे उतना आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा. pretty logical, right? आप अपने पास कोई भी आप चीज देखो, आप ऊपर देखें, अपने रूम के अंदर, you're looking at, let's say, a corner of your room. आप जितना उस कॉर्नर के करीब जाते जाओगे आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा. आप जितना उस कॉर्नर से दूर जाते जाओगे आपको कम देखना पड़ेगा, कम दूर देखना पड़ेगा, राइट? जितना आप उस कॉर्नर के करीब जाओगे उतना आपको ज्यादा ऊपर देखना पड़ेगा, जितना आप दूर जाओगे उस कोऑर्डिनेट से उतना आपको कम ऊपर देखना पड़ेगा, आपका एंगल छोटा होएगा. सो एसेंशियली व्हाट्स हैपनिंग इज, आप ए पॉइंट के जब सबसे क्लोजेस्ट होगे, जब पॉइंट ए के सबसे क्लोजेस्ट होगे, तब आपका एंगल सबसे बड़ा होगा, राइट? आप इस ग्राउंड के इस यहाँ पे जो राइट वाली एग्जांपल है, आप इस पॉइंट के जो फ्लोर है, उस बिल्डिंग का जो नीचे बॉटम है, आप जितना उसके पास जाते जाओगे उतना आपका एंगल ज्यादा होता जाएगा. So in this particular case, Laiba, that's correct. The closer we are to A, the higher that angle is going to be. तो A के closest हम तब होते हैं, A के closest होते हैं हम इस point के ऊपर, ये जो हमने पहले find किया. Let's call this point X here. इस point पे हम A के closest हैं, तो हमें यहाँ से angle of elevation figure out करना है. Now remember मैंने क्या कहा था आपको 3 dimensions के अंदर, how do you figure out angle? DAX जो एंगल है, DA वर्टिकल है, AX is horizontal, तो DAX is 90 degrees. ये जो एंगल बन रहा है ना DAX, this is actually 90. Okay, वो DA वर्टिकल है और AX horizontal है. A के ऊपर जो सारे एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्रीज के बनते हैं. Given that DA उसमें एक साइड हो, DA के साथ जो भी एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्रीज के होंगे. तो DAX जो ट्रायंगल है ना, that looks something like this. DA is vertical like this. A is at the bottom of that vertical line. और ये आपके साइड पे एक x आ रहा है. इसको ट्रायंगल को आप इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो. 2 डायमेंशन के अंदर बनाओ. This is your D. A is the foot of the perpendicular, the point at the bottom. This is point X that you have. ये एंगल आपको फिगर आउट करने का वो कह रहा है. AX आपने फिगर आउट कर लिया पहले, that is 45.3. हमने हाइट भी पहले फाइंड की थी, that was 20.7. So the angle that we're looking for, that's basically tan theta is equal to 20.7 divided by 45.3, because theta के opposite side जो है that is perpendicular, theta के साथ वाली side जो है that is the base, so that's perpendicular over the base. यहाँ से हमारे पास theta की value आ जाएगी. You can see what that theta is. 20.7 over 45.3 का tan inverse करें और देखें आपके पास वो क्या आता है. So can anyone tell me what that value is? Tan inverse of 20.7 over 45.3. That's 24.6. That is the angle that we have. This is the greatest angle that you can have there. All right. Thank you, Laiba and Bugair. We get 24.6 degrees there.
That is the greatest angle that we're looking for. जितना आप A के पास जाओगे उतना आपका एंगल बढ़ता जाएगा और A के क्लोजेस्ट हम कब होते हैं हमारे पास ये परपेंडिकुलर बनता है वहाँ. That is when we are closest to that point A. Okay, I hope this was helpful. So this covers most, in fact, all the concepts that you need in trigonometry. Of course, you need more practice. If you need more practice, you can also join this other group if you are interested. I'm just posting the link of that group here. Otherwise, of course, we are going to cover the concepts of these major topics here in this group. The group में concepts सारे discuss करेंगे इंशाल्लाह. More practice will be there in the other group और वहाँ पे हम past papers we'll try to do as many recent past papers as we can and the time that we have inshallah. So thank you very much for staying until the end, everyone. That's all for today. I'll see you all again next Monday or maybe on the other days as well in the other group. It was good. It was amazing having all of you as well, Laiba. So thank you for all the calculations and helping me throughout with your quick calculations. Thank you very much, everyone. I'll see you all again. Allah Hafiz. Take care. Thank you, Stephen. Thank you very much. I'll see you all again. Allah Hafiz.